Good morning students, welcome to Commerce Gyanpeeth Odisha. Today we are going to start Indian Contract Act 1872. ठीक अछि? तो Indian Contract Act तमे सब एक्वेंट हे कि थिबो obviously foundation class रे बुझिला. तो it has a very basic concepts जोड़ा रगी other laws माने जहाँ भी हमें पढ़िबो sense intermediate रे final रे और other I mean degree से जहाँ भी पढ़िबो जहाँ भी अछि सेटा कोन हमर Indian Contract Act से तो बहुत लिंक हे कि थिबो. Each and everything is interrelated and interconnected with Indian Contract. एटा क्वाइट इंटरेस्टिंग चैप्टर टा लोक एटा बहुत बोर करि दियंती बिकॉज़ कोन अजता जिंस सब डिस्कस करी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जहां भी अछि हम सेटा फाउंडेशन रे पढछु इंटर रे पढछु बट डिफरेंस कोन ना पर्सपेक्टिव इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टा इंटरमीडिएट पर्सपेक्टिव रे केति की सेटा रेलेवेंट सेटा हमें देखिबार अछि तो जिंस कोन हमहु को पॉइंट रो केस लो आसीबो कि कोन आसीबो हला आमे किंदी पढिबा हमर स्टडी अप्रोच रहबो फर्स्ट हमें टेक्स्ट बुक रू जहां भी रेलेवेंट पॉइंट्स अछि सेटा डिस्कस करबा along with that आमे पाखरे साइमल्टेनियसली चार्ट काटिबा we'll have more preference to making charts हला जोडा कि तमे लास्ट एग्जाम आकरे जकडो 1 मंथ थेबो रिवाइज करबो एवरीथिंग शुड बी ऑन अ चार्ट पीस ऑफ पेपर हला कोन पई ना तमहु तमे जानचो एग्जाम भितर हमर गैप नै गोटे गोटे एग्जाम भितर हमर गैप नै तो जेतळो लॉ डा पूरा जेतळो गोटे चार्ट रे रहिबो you will be able to revise it very quickly ठीक अछि we are starting Indian Contract Act फर्स्ट पार्ट देखो मु बेसी बोरिंग करिबिनी ए जिंसडा को हैला जेति की रेलेवेंट सेति की थिबो तमरो बट स्टिल यू विल गेट ऑल द कॉन्सेप्ट्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रो नाडा कोन बेंती हेच अगेन स्टार्टिंग विथ एज अ टिपिकल टीचर जेंति स्टार्ट करिया सिंध स्टार्ट करिया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रो ना इंति कोन पे हेच वी हैव थ्री थिंग्स इन इट ओके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्ट so this is the year in which it has been started or enforced or I mean introduced jaha bhi tame koi paribo सबले कोन हमर एक्ट रो ना जेतडो को आसीबो we have four things in it गुटे होची को कंट्री को एडा एप्लीकेबल सेकंड थिंग होची को जिंस एथरे थिबो मेजर पर्सपेक्टिव को जिंस को धर के थिबो थर्ड थिंग होची whether it's an act rule regulation jaha कुछ भी कोन सेडा मेंशन करबो and this is the year in which it has been introduced ठीक अछि तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रो मेजर मीनिंग होची व्हाटएवर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर एक्जिस्टिंग इन द कंट्री व्हाटएवर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर एक्जिस्टिंग इन द कंट्री से सब जिंस डिस्कस करे तो कॉन्ट्रैक्ट रो मीनिंग ना हमें कोन ब्रेक करी की बुझिबा जेतरो को ब्रेक करी की बुझिबा केबे हेले से जिंस रो भूल हबन क्लियर तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रो मतलब कोन ना जहां किछि भी कॉन्ट्रैक्ट्स एक्जिस्टिंग विद इन द कंट्री ऑफ इंडिया आर डिस्कस्ड इन इट सब कॉन्ट्रैक्ट को एड्रेस कराबो हैला फ्यूचर जेतरो तमे गोटे सीएमए हबो यू विल बिकम अ सीएफए बहुत जल्दी तमे भितरे के ना के तो सीएफए हबो कि सब भी हेई पारियो फाइन सो सीएफए जेतरो को हबो यू विल बी एबल टू डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ लॉ पर्सपेक्टिव्स माने कोन तमे तम कंपनी को जहां किछ भी गोटे लीगल एडवाइजर हिसाब रे कोन करियो काम करियो लीगल एडवाइजर माने कोन जहां भी कॉन्ट्रैक्ट तमे साइन करछो कि तमरो जे भी मैनेजर अछि सी साइन करछि से सब जिंस लीगल ना नै को जिंस को धरि कि तम ऊपर केस हेई पारिबो को जिंस को धरी तमरो कोन मिस्टेक्स हेई पारिबो सेडी कि के तमो किमती फसै पारिबो से जिंस सब तमे किमिति जानिबो ना कॉन्ट्रैक्ट रो जहां भी इंट्रोडक्टरी पार्ट उडा अछि कॉन्ट्रैक्ट रो नेचर कोन अछि तम आडर किमती भूल न हबो के तमो किनि चीट करि पारिबोनी सब जिंस तमे कोन कॉन्ट्रैक्ट रो मीनिंग रो जानि पारिबो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपोर्टेंट टू ब्रेक द वर्ड्स हियर ठीक अछि तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 फर्स्ट देखो जेति की जिंस अंडरलाइन हबो यू शुड हैव ऑल दिस थिंग्स इन योर नोटबुक हैला नोटबुक रे सब जिंस लिखिबो इमिति ना कि हम टिपिकली गुडे बीकॉम पढला आलेगा एवरीथिंग पढिबो हैला कॉन्ट्रैक्ट्स आर क्रूशियल फॉर कैरिंग आवर डेली लाइव्स इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड corresponding regulations there should be anarchy what do you mean by anarchy कोन पे एनआरकी इन द सेंस कोन जदी कॉन्ट्रैक्ट नै गोटे जिंसर सिग्नेचर हेतिबा गोटे पर्टिकुलर जिंस नै लीगल ऑब्लिगेशन नै तो एनआरकी रहबो इन द सेंस कोन ना तमको गोटे माने अथॉरिटी रहबो जे की कहबो कि एति की जिंस एक्सेप्टेबल एति की जिंस एक्सेप्टेबल नै सो दैट्स एनआरकी अच्छा मु फर्स्ट पैराग्राफ ता कोन पे पढौची इफ इट्स रेलेवेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जदी मते लागी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रो गोटे दिटा जिंस एथिरा आसी पारिबो देन ओनली मु से जिंसडा डिस्कस कर ओके तो मु कहिबी एथिरे कोन कोन जिंस अंडरलाइन करबो से जिंस अंडरलाइन करबो हैला ए सब होचे तमरा एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट्स रो मीनिंग अछि प्लीज मार्क इट डाउन कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोस रिलेशनशिप्स दैट ले डाउन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज टू व्हिच आर more often than not negotiated and agreed by themselves so here you have to underline kono relationships that lay down
rights and obligations हैला this is a crucial point here so कौन कहूची relationship that lays down rights and obligations what do you mean by rights and obligations आमे contract टा break करके पुणी पढ़बा but एथिरो जो question आछे I am discussing it again तो relationship that lay down rights and obligations what do you mean by rights and obligations rights माने कौन very good ठीक अछि माने गोटे जण पाखरे कोन पावर अछि व्हाट्स द पावर माने ता पाखरे कोन पावर अछि आ गोटे जिंस आ गोटे लोक को धरि हैला जनंगर राइट आ जनंगर ऑब्लिगेशन माने ही इज लायबल टू दिस पर्सन जनंगर ऑब्लिगेशन आ जनंगर राइट बुझि पालो whenever a person is accountable or liable we tell them as obligatory कि obligations अछि कहिगे and rights माने कोन पावर से कोन करि पारिबो हैला you can write down here powers एडा obligations ର meaning होची कोन liability or accountability liability or accountability ठीक अछि contract रो main जिंस होची कोन rights and obligations रो relationship contract भितर थिबो obviously this person is liable for this particular amount and I have the right to claim that amount so दीरा जिंस contract रो mention हेतिबो so clearly sentence टा हमको सेटा signify करछ of the parties or to which are more often than not negotiated and agreed by themselves obviously contract जे sign करथि सब बळे कोन प्रोफेशनल थिबो हमरो त से कोन बार्गेन करबो कि एतिके अमाउंट आगा हबो एतिके जिंसा आगा हबो नै ताकि को जिंसा एग्री करि करी सिग्नेचर टा पकेबे सो सेडा कुआछ in every sphere of life से सब जिंसा कहिछि again important जिंसा होछि a perfect contract please underline a perfect contract is one where all terms and conditions along with all details have been clearly defined, leaving nothing to ambiguity or arbitrary construction. This was a past exam question. ठीक अछि कोन पे से फर्स्ट पैराग्राफ past exam question देला माने मो इन दी उडे अनसिग्निफिकेंट जिंस भी डिस्कस करबी काहे गेले तमे जानिबा दरकार पिला ने कोन करंती मोस्ट प्रोबेबली दे गो टू द इंपोर्टेंट जिंस माने कॉम्प्लिकेटेड जिंस सब कवर करी हैला बट सिंपलर जिंस तांके एते ध्यान देबे तो एग्जामिनर कोन करियो सिंपलर जिंस रो क्वेश्चन पछारिबो तो सिंपलर जिंस हम केबे देखि परिया एग्जाम प्रेशर तो वी कांट डू दैट तो एबे हमको सिंपलर जिंस भी कवर करबा को पड़े सो जिंस रो मीनिंग होची कोन व्हाट डू यू मीन बाय अ परफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट गोटे परफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट केबे होची ना वेयर ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस along with all details कोन कोन अछि हमरो टर्म्स अछि कंडीशंस अछि डिटेल्स अछि have been clearly defined हेची leaving nothing to ambiguity or arbitrary construction what do you mean by arbitrary construction or ambiguity जिंस होची कोन confusion ambiguity रो मीनिंग होची confusion arbitrary construction माने कोन arbitrary construction माने होची जहा भी माने हमें assumptions उडा को नै जिवु से assumption उडा को न नै गिरी assumption केबे हमें नबा जतरा हमें को जिंस रे कंफ्यूज हे जइतु कि को पॉइंट क्लियर नै से जिंसो किछि भी हमन कोन सेडी देखेबनी माने सब जिंसो क्लियरली थिबो ताको हमें कहया कोन परफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट एडी हमें तीनटा जिंसो कहलु मो जेतो एडा टिके क्लमजी होची पाखरे लिखुची contracts is equal to rights plus obligations relationship drawn rights और obligations भितरे जहा किछ भी relations किबा conclusion ताके draw करचंदी all these things come under what contracts ठीक अछि आ गुडी जिंस मु कोन कहितली contract भितरे the contract has to be particularly a perfect contract बुझि पालो गोटे perfect contract केतोळ हमें कहिया ना जतोळ को terms conditions आ कोन details तीनटा जाको जिंस framed in such a manner that avoids what confusion mo ambiguity रो other words लिखि दोची confusion and assumptions बुझि पालो पूरा पैराग्राफ टा पढिबा पडियो कि नहीं लाइन टा पडियो पडे कि नहीं एबे गुटे सान माने यू इट विल टेक अ कपल ऑफ सेकंड्स गुटे 5-6 सेकंड्स लागिबो तुमको रिवाइज करिया पे कॉन्ट्रैक्ट माने होची राइट एंड ऑब्लिगेशन रिलेशनशिप एंड कॉन्ट्रैक्ट शुड बी परफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट माने कोन तीनटा कीवर्ड से कहि कोन कहि
टर्म्स कंडीशंस डिटेल्स आ से तीनटा जिंस एमिति फ्रेम हेथिबो जेमति कि कोडी भी कंफ्यूजन नथिबो माने गोटे नॉन पार्टी जे भी अछि से भी देखिले कोडी भी कंफ्यूजन नथिबो कि assumption नथिबो बुझिला क्लियर तो दिस इज द वे आई एम टीचिंग हैला एमिति मु पढेबी तो तमे धीरे धीरे करी एक्वाइंट हे जिवो यू शुड हैव सम रनिंग नोट्स हैला रनिंग नोट्स थिबो आ मु कहिबी को जिंस तमरो फेयर नोट रे रहबो एंड मटेरियल विल बी प्रोवाइडेड आफ्टरवर्ड्स ठीक अछि तो एडी देखो मेन जिंस आसिला इट वाज एनैक्टेड इन 1872 तो एडी तमे लिखि दे पारिबो जहां भी हमर स्टार्टिंग रे हम जो लिखि नथलो 1872 एडी लिखि दियो enacted act was enacted in this year बुझिला act was enacted in this year 1872 रे जिंसडा इंट्रोडक्शन कराइथिला enacted माने कोन इंट्रोडक्शन कराइथिला जिंस कोन पाखरे ऊपर लेखिबार अर्थ होचे कोन से जिंस हम पाखर लेखिला बेलको हमको विजन क्लियर रहइबो जत्ते विजन हमर क्लियर रहिबो अगेन से एम्बिग्युइटी रे फैक्टर में कोच विजन जत्ते क्लियर रहइबो हमर जिंस सेति की अधिक मन हैला देन देखो ऑल एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटीज आर एप्लीकेबल limit of liabilities and grounds for termination are the clauses that the act essentially deals with among provisions से कहूची कोन एथिरे कि ए एक्ट भितरे कोन कोन अछि हम all essentials of a valid contract indemnities are applicable limit of liabilities grounds for termination are the clauses that the act essentially deals with among other provisions माने से कहूची एक्ट भितरे कोको जिंस अछि त मु एडा गोटे एमसीक्यू क्वेश्चन आले आसी पारे Contracts minimize the risk of commercial transactions via great deal. कौन हबो? It's the purpose of contract. कौन हबो? ना contract जहाँ भी अच्छी. Contract ର purpose कौन हबो? Ignore my bad handwriting, है ना? So जिनसे होची कौन? Acquaint नहीं मते थरे. That's why थोड़े bad handwriting avoid कर. Avoid नहीं, है ना? Contracts minimize the risk of commercial transaction. Please write down minimization or reduction the risk of commercial transactions. Hello, this is the purpose of what? Purpose of contract. मु कहिथिली contract हेले purpose कोन माने मेन जिंस कोन पे हम contract करछु ना सेपट पार्टी हमको लायबल रहबो हमर वाले केति की राइट थिबो से डरिबो हमको बुझिला ना नहीं भूल करिबा को डरिबो एम हैला तो the laws relating to contract enforce clarity between parties and help in increasing productivity एडा होचे हमर फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट होनो increases productivity enforces clarity hello increases productivity enforces clarity enhances transparency well defined relationship clear understood जिनसे होची कोन पर्पस हमको पांचटा जिनसे कहिची हेडी कोन कहिची ना मिनिमाइजेशन और रिडक्शन ऑफ द रिस्क ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी कोन पे ना कॉन्ट्रैक्ट थे बोली कहले से डर रहले कोन प्रोडक्टिविटी तारा इंक्रीज हबो एफिशिएंसी इंक्रीज हबो देन होची एनफोर्सेस क्लैरिटी हैला कॉन्ट्रैक्ट में कोन पड़लो एम्बिग्युइटी एंड कंफ्यूजन रहिबनी तो क्लैरिटी एनहांस हबो ना नहीं आउ कोन एनहांसेस ट्रांसपेरेंसी लोको को जिंस लुचै पारिबे दे हैव अ पर्टिकुलर स्कोप एंड कंडीशंस जो भितरे कोन ताकि सब जिंस डिस्कस करबा को बाध्य देन अछि कोन हमरा वेल डिफाइंड रिलेशनशिप माने कहबो ए पर्टिकुलर पर्सन केति की अमाउंट पे लायबल मो केति की अमाउंट रिसीव करबो सो हमरा कोन रिलेशनशिप जा बे माने प्रिंसिपल हो कि इंटरेस्ट हो जहां भी मु रिसीव करबी सब जिंस रे गोटे पर्टिकुलर ये अछि माने से स्कोप भितरे तमे देदार अछि एंड से स्कोप पर्यंत मु तम कोन ऑब्जेक्ट करि पारे किमा कोन ऑर्डर करि पारे बुझिला सो दिस इज द पर्पस
देन आसी हमरो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हैला एडी से कहछि कोन ना जिंस कोन एग्रीमेंट केमति स्टार्ट होबो ऑफर कोन एक्सेप्टेंस कोन प्रॉमिस कोन कॉन्ट्रैक्ट कोन हैला सो आई होप तमे टिकेडा नोट डाउन करि देबो फर्स्ट रे क्लियर हैला नाउ आमे जहां भी अछि कीवर्ड्स वगैरह अछि सेडार गोटे गोटे डिस्कस करबा देन आई एम गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम दिस फाइन मोडे लेखुची फर्स्ट थिंग होछि कोन हमरो प्रपोजल व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रपोजल not 14 February वाला proposal but Indian Contract Act वाला proposal okay proposal रो meaning so proposal is when one person signifies his willingness signifies his willingness to do or abstain from doing something so this is a what proposal हैला ए सब जिंस कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हेबा पई आई मीन कॉन्ट्रैक्ट को वर्ड ता ब्रेक हेबा पई वी हैव टू लर्न ऑल दिस थिंग्स कीवर्ड्स हैला फर्स्ट वर्ड होची कोन हमरो प्रपोजल फर्स्ट सब लिखि दियो तापरे हम बुझिबा ठीक अछि देखो प्रपोजल एक्सेप्टेंस एंड प्रॉमिस थ्री वर्ड्स हम एडी सिखुछ प्रपोजल एक्सेप्टेंस एंड प्रॉमिस प्रपोजल रो मीनिंग कोन ना व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू और abstain from doing something what do you mean by abstain please write down it's prevent from doing something हैला this is called proposal माने गुटे पर्सन तार विलिंगनेस माने कोन इच्छा किबा कंसेंट कौन कंसेंट ना टू डू और abstain from doing something to do माने कौन मो चाहूची ए कंपनी रे कौन एडवाइजरी फाइनेंशियल एडवाइसेस प्रोवाइड करिवि दिस इज समथिंग व्हिच इज वी आर डूइंग abstain from doing रे एग्जांपल कौन ना मो तम पाखरे ट्यूशन पढथिली हैला मो एबे अलगा इंस्टीट्यूट स्टार्ट करिबिनी सो दिस इज abstaining माने मो मना करछि कि मो एमति करिबिनी कहि कि मो जतळ गुडे प्रपोजल टी दोछि से प्रपोजल टा जतलो एक्सेप्ट होबो सेटा कॉन्ट्रैक्ट होबो तो अगेन प्रपोजल कोन दोछि ना मो ए जिंसटा करिबिनी ए जिंसटा करिबि एली देई पारि कि ए जिंसटा करिबिनी एली देई पारि जो भी जिंस मु करूछि से जिंस कोन कहया हमें प्रपोजल माने मो मोर इच्छा जणोछि कि गुड जिंस मु करिबि कि गुड जिंस मु करिबि क्लियर फ्रॉम डूइंग समथिंग प्रपोजल इज एज सिंपल एज दैट एक्सेप्टेंस रो मीनिंग कोन मो गुड पर्सन को कहिली मोर प्रपोजल टा गुड पर्सन आगरे मु रखिली से पर्सन कोन करियो तार कंसेंट जणेबो माने मु कहिली कि मते फाइनेंशियल एडवाइसेस प्रोवाइड करियार अछि रुद्र रो कंपनी रे से कोन कहला मते कि दरकार नै मते हैला दरकार नै कहला सो दैट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन जदि से कहला नै मते दरकार अछि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम सो दिस इज अगेन एक्सेप्टेंस बुझला द पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज कंसेंट तार जहां भी कंसेंट अछि से सिग्निफाई करिवो ना नै से जहां भी अछि से कोन एक्सप्रेस करिवो सिग्निफाई रो मीनिंग कोन एक्सप्रेस बुझी पालो सो प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस दीडा जगह हेले कोन हला प्रॉमिस तो मते एक्सेप्ट करियो तो आई मीन फाइनेंशियल एडवाइसेस पे एक्सेप्ट करिवो तो बुझिलो
एमती तो प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस बुझिला जहां भी परियो तमे जो भाबछ सेडा ले ही परियो क्लियर तो प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस क्लियर प्लीज राइट डाउन अच्छा ए भितर हमर दीटा टर्म्स आछे कोन प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी हैला जोटा कि हमें क्लियरली पढिबा मु एबे कीवर्ड रो बस डिस्कशन वगैरह करछि प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी दीटा जिंस आसबो प्रॉमिसर के ना whoever is promising something हैला promise is the person accepting the हैला एडी लिखि दियो promiser and promisee person to whom it is promised is a promisee clear next word amara hoji kono consideration kon कहले consideration promisee does or abstains from doing something at the desire of the promise बुझी पालो at the desire of the what promise consideration is when the promisee does or abstains from doing something at the desire of the promiser बुझिला सी जदि को जिंस कहियो प्रॉमिसर कोन कहिथिबो गोटे प्रपोजल करियो से प्रपोजल रे से कहियो कोन मु ए जिंस करिवि के ए जिंस करिवि तो ए जिंस करिबा पई कि न करिबा पई मते कोन कोनसी जिंस कंसीडरेशन रे दरकार से कंसीडरेशन कोन सेडा होची कोन हमर ए पार्ट रे आसी तो promisee does or abstain from doing something at the desire of the promiser जहाँ भी desire करियो आ हिसाब रे ये कोन पैसा पठेबो कि कोन गुटे कॉन्ट्रैक्ट स्टॉप करिवो कि जहाँ भी से जोड़ा कहम मनरा से आ ऊपर कोन टैक्स लायबिलिटी लेवी करी जाउथला किबा कोन एक्सपेंसेस बड़े जाउथला से कहे कोन मो तम पे काम कर देबी ए एडवाइसेस प्रोवाइड कर देबी तमे कोन करियो आउ ए लायबिलिटी पकियो लेबो ऊपर एक्सपेंसेस पकिबन सो दिस इज एब्स्टेनिंग प्रिवेंट करिवार किंबा से कहियो मो ए सर्विसेज प्रोवाइड करिवि तो ता पे तमे मते किछि पैसा दियो तो एटा कोन डूइंग समथिंग तो प्रॉमिसर डिजायर हिसाब रे प्रॉमिसी इज डूइंग समथिंग सो दिस इज कंसीडरेशन हैला एबे आसी हमर कोन एग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन एग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन प्रॉमिस कौन थिला हमर प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस लॉर्ड कौन प्रैक्टिकल हेला भाबछ ना नहीं दिस इज अ सिग्निफिकेटरी स्टेटमेंट माने दीटा जिंस कंबाइन करले कौन आसे सेडा में देखुछ तो एग्रीमेंट कौन प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन प्रॉमिस ही जे प्रपोजल हैला एक्सेप्टेंस हैला ताकू माने ता हिसाब रे कौन ओटे कंसीडरेशन रे डिसाइड हैला दीटा जे तळो को कॉम्बिनेशन रे हम कौन एक्जिस्टेंस को आसिला सेडा हबो कौन हमरो एग्रीमेंट को रीच हेबा पे एतिके जिंस रो कीवर्ड्स रो एसेंशियलिटी ता हमको दरकार एग्रीमेंट रो अंदर मीनिंग लिखो a combination of reciprocal promises
forming equalized sum of consideration for the existing parties. A combination of reciprocal promises forming equalized sum of consideration for the existing parties. जे भी existing parties अच्छी तांकन पे जेतले हमरो combination of reciprocal promises आसीबो. Reciprocal promises माने कोन? तमे मते गोटे जिंस प्रॉमिस करियो, मु तमु गोटे जिंस प्रॉमिस करि. I'll take a promise from you. मु कोन प्रॉमिस करि? ना मु टाइमली कोर्स कंप्लीट करिवि. But I need a rank from you. हला, that's the reciprocal promises. I'm not asking for more. हला, जिंस कोन मु तमु सब जिंस सिंपलर करि कि देबी. You should give me a rank. बुझिला? Promise that you'll score a rank. Forming equalized sum of consideration for the existing parties. माने मते भी ए जिंस बेनिफिशियल हेबार अछि, तमको भी ए जिंस बेनिफिशियल हेबार अछि. माने इमति नै कि मु तमको रैंक पचर देली तो तम पे सेडा बेनिफिशियल कि मो पे बेनिफिशियल सेडा पर देखिबा. बट जिंस कोन मो जहां भी तमको सर्विस किंबा प्रॉमिस प्रोवाइड करछि दैट शुड बी बेनिफिशियल फॉर यू. रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस र मीनिंग होछि promise to the opposite parties. Promise to the opposite parties. बुझी पालो? Promise to the opposite parties. जे भी opposite parties वगैरह अछंदी से मानु को कोन promise देबा सेडा होची कोन हमरो reciprocal promises. And these promises should be beneficial from the receiver perspective. जिनसे कोन तुमको सिंपलर करिया पे स्टेटमेंट गुडा का लेखौची एवडा सब एग्जाम आकरे तमे पढिबोनी बट कंफ्यूजन न हेबा पे जिनसे तम पाखरे अछि. लाइक जदी तमे गोटे नुवा नोवेल स्टार्ट करलो यू नीड अ डिक्शनरी. बुझना कोन पे ना नुवा वर्ड्स रो मीनिंग जानिबा पे सिमिति हमर कोन इंट्रोडक्टरी जिनसे रही. देखो a combination of reciprocal promises forming equalized sum of consideration for the existing parties. Reciprocal promises ର meaning होची promise to the opposite parties. हैला आउ ए promise टा कोन these promises should be beneficial from the receiver perspective. माने जे भी रिसीव करछि ताको एडा कोन beneficial लागियर अछि. मु कहली comprehensive notes provide करबी तम पे सेडा beneficial नै. मु कहली कोन मु खाली गाय पळी तमे रैंक आन दियली कहले हबो कि नै. That's not beneficial for you. से गायडा तमे ले कर परि Spotify रे सुनि परि हैला. So जिंस कोन रिसीवर पॉइंट ऑफ व्यू रो से जिंसडा बेनिफिशियल अछि ना ना. That's the perspective. Clear? एबे में देखिया टेक्स्ट बुक रे कोन दैछि. To constitute an agreement, it is essential that there exists an offer. So ऊपर लिखो agreement starts with offer. देखो देखिबा को एटा केते सिंपल स्टेटमेंट लागुछ बट जदी एग्जाम रे आसीबो त मन पडियो नै. आई एम डैम श्योर कोन पे एग्रीमेंट भीतर केती जिंस अछि हमें केती जिंस देखिलो एडी देखुना प्रपोजल देखिलो एक्सेप्टेंस देखिलो प्रॉमिस देखिलो हैला कंसीडरेशन देखिलो कोड स्टार्ट हो बोले हमें कोन कहया ना एग्रीमेंट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ ऑफर हैला. तो प्लीज बी अटेंटिव एंड लिसन. Such offer when accepted gives rise to an agreement. तो offer when accepted कौन हबा हमरो gives rise to agreement. बुझलो agreement स्टार्ट हबो ऑफर रे ऑफर एक्सेप्ट हैला हबो हमरो एग्रीमेंट. तो सेम सर्कल भितरे बोलछि तमे जतलो को चार्ट बनेबो केमति लिखिबो ऑफर acceptance agreement. बुझना रफ रे इदी कर देली हला ऑफर एक्सेप्टेंस अग्रीमेंट इमति कहले कोन विजुअली तुमको मन रहबो स्टेटमेंट रो देखि केमति. सो आई एम टीचिंग यू द डिफरेंट वेज माने जेमति जाओ भल लागिले से सेमति लिखि पाए. बिकॉज़ कोन फाइनल रे जतलो को लॉ आसीबो यू विल हैव आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 16 डिफरेंट एक्ट्स देयर. 16 डिफरेंट एक्ट्स आसिला को यू हैव अ कपल ऑफ थिंग्स टू लर्न.
फर्स्ट थिंग होची टेक्स्ट बुक रे जहाँ भी अच्छी एक्ट रे जहाँ भी अच्छी सेकंड थिंग होची एग्जाम रे कौन दरकार थर्ड थिंग होची केस लॉ सॉल्व करियो कौन दरकार तो एबडो तुम कौन शिखिबो ना लॉ लैंग्वेज टा तुम पर्सपेक्टिव रे एग्जाम पर्सपेक्टिव रे केमिति तुमको नोट डाउन करियो अछि फाइन इमिति भी लिखि पारियो सेमति भी लिखि पारियो देखो कंक्लूजन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट केमती हबो ना फुलफिलमेंट ऑफ अदर प्री रिक्विजिट्स ऑफ कंसीडरेशन हैला कंक्लूजन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट केमती हबो ना फुलफिलमेंट ऑफ अदर प्री रिक्विजिट्स ऑफ कंसीडरेशन ए एंटायर पैराग्राफ जहां भी अछि इट्स वेरी इंपोर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू मु कहि देबी तुमको आगुडो कि को पैराग्राफ टा केमिति को जिंस पय देखि जदि मनर एटा लॉन्ग क्वेश्चन रे आसीयो किबा केस लॉ रे आसीबो तो मोर टीचिंग पर्सपेक्टिव अलगा थिबो जदि एटा बिट क्वेश्चन आसीबो तो मु गुटे वन लाइनर वाला कहबी हैला तो तमे सेटा कैच अप करबा अछि फाइन तो कॉन्ट्रैक्ट केमती कंक्लूड हबो एमसीक्यू रे आसी परबेडा तो फुलफिलमेंट ऑफ अदर प्री रिक्विजिट्स ऑफ कंसीडरेशन माने कंसीडरेशन जेतलो को डिसाइड हे होला वंस हैला तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली साइन हे जिवो दे बुझो तमे जदि मोर ट्यूशन करबा को जाउछ हैला मु पचारि कि मोर सैलरी केते हैला से पर्सन मते कहइबो से पर्सन मते कहयो कि तमे केते की पढे पारबो हैला सेटा उल्टा भी हे परियो कि मु पचारि कि केते की तमे मो केते पढेबार अछि कि से पर्सन कहे तमरो एति की सैलरी अछि तमे केति की पढेबा चाहूछो से सैलरी पय इमति हे परियो तो कंसीडरेशन माने कोन कहथली रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस सो रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस वंस से तो डिसाइड हे गला डिसाइड हेला हमर कॉन्ट्रैक्ट तो ऑटोमेटिकली साइन हेला काई सेडा होची लास्ट स्टेप हमरो पैसा केति की मिलियो को आ मु केति की पढार अछि को दिरा जे सेंस तो वंस डिस्कस हेला तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली साइन हे जिवो तो बुझो कंक्लूजन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट केमिति होबो ना प्री रिक्विजिट्स माने कोन other conditions that are requiring माने गुटे कॉन्ट्रैक्ट ता फुलफिल करिया पे कोन कोन कंडीशंस दरकार अछि इमति नै कि मु ब्लाइंडली साइन कर देबे मते जानिबा दरकार कि क्लास टाइमिंग कोन केतेटा पिला अछंदी केते घंटा करिबार अछि मु सेटा फुलफिल करि परिबे ना नै वीकली मु केते दिन देबार अछि केते दिन डेडिकेट करिबार अछि रिवीजन क्लासेस केते की हबो डाउट सेशंस केते की हबो दीस आर ऑल व्हाट प्री रिक्विजिट्स मीनिंग जानछ तो रिक्विजिशन आगरे कोन मु जानिबा दरकार दैट्स prerequisites of consideration तो एडे लिखि दियो कोन पे लिखि दोची मु अगेन कहूची सेम जिंस आगा बट दुसरी बार क्लियर हबो सो contract shall be concluded only upon fulfilling the different conditions that are pre-existing please write down pre-existing prerequisite ro complementary word hochi pre-existing within the scope of the contract clear within the scope of the contract ए भितर से प्री रिक्विजिट्स कोन कोन कहि छी हमरो हमें इन डिटेल डिस्कस करबा जो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं लीगैलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कंपिटेंस ऑफ द पार्टीज एंड सो ऑन ही हैज गिवन सम एग्जांपल्स हियर कॉन्ट्रैक्ट्स आर लीगली एनफोर्सेबल हाउएवर एवरी एग्रीमेंट मे नॉट बी एनफोर्सेबल अंडर लॉ बुझि पालो डिफरेंस द की पॉइंट ऑफ डिफरेंस कोन की डिफरेंस होची एरे बेसिक डिफरेंस पड़ा स्पेस key difference between contract and what agreement कौन ना contract is legally enforceable but agreement is not enforceable under law बुझ पाला contract is legally enforceable agreement is not enforceable under law एवडा को बहुत माइनर जिंस उडा बट ए जागा बेसिक भूले दबो कंफ्यूज कर दबो एग्जाम बिकॉज़ कोन तमे बहुत जिंस रिवाइज करिकि जिवो क्लियर सेक्शन नंबर गुडा को जदी ताको इच्छा हला से कोन माने बहुत रेयरली पचार दिए
तो एग्रीमेंट रो हमर सेक्शन नंबर होची सेक्शन 2E आउ जहाँ भी प्रॉमिस रो सेक्शन नंबर होची 2F क्लियर कोड रे डिफाइन हेची सेटा पचरिबो तमे जेतलो को लिखिबो लाइक चार्ट भितर कोडी गुटे इंक्लूड कर देबो रेड कलर पेन रे ताकि कोन टिके स्ट्राइक हे जिवो अलगरे न पडके अच्छा तुमको एक्स्ट्रा टिप माने पढ़ाई से हटके गुटे टिप होची कोन जेतलो को चार्ट बनेबो प्लीज ट्राई टू यूज येलो कलर चार्ट पेपर्स हैला चार्ट पेपर ओडा कोन येलो कलर रखिबो एंड जहां भी से ऊपर लिखुचो सेटा एसेंशियली रेड कलर रहिबो ग्रीन कलर रहिबो डार्क ब्लू रहिबो हैला थ्री कलर्स हैव टू बी यूज्ड तो माइंड सहित सेटा बहुत जल्दी सिंक्रोनाइज हबो यू कैन ट्राई इट जहां भी तुमरो एक्जिस्टिंग लॉ रो जहां भी सर आगु पढ़ी चंदी से जिंस ओडा को तुम ट्राई करके देखि पारे इंडस्ट्रियल लॉ बेसिकली जहां भी अछि इट हैज अ लॉट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्वड इन इट माने केते वर्कर दरकार केते की थ्रेशोल्ड लिमिट वगैरह दरकार से सब जिंस कोन तुम रेड कलर पेन लिखि रखि पारिबो बिकॉज़ नंबर्स रेड कलर पेन रे रहले माइंड बहुत जल्दी सेटा एक्सेप्ट करी फाइन पढ़ाई से हटके देखो अग्रीमेंट every promise and every other set of promises forming consideration for each other we have already discussed it तो act कोन कहउची this is the bare act हमें कहू माने कोन act रे जहां भी लिखा है एबे जे हमें कोन बुझिलु ना मीनिंग कोन बट act कोन कहउची ना every promise and every set of promises promise अंडर केते उडा सेट आसीबो हमरो माने ए जिंस मु प्रॉमिस करली कि मैं कोर्स कंप्लीट करबी this is my promise every set of promises कोन तापर मु कहिगी I will make sure that you people are getting a clear understanding of the subject हैला आ बाकी जहां तमे पढिछ से जिंस तमरो रिटेन हेछ तापर कोन मु वीकली टेस्ट करबी तापर कोन डाउट थिले क्लियर करी सो दीस आर द सेट ऑफ प्रॉमिसेस प्रॉमिस अछि तार कॉम्प्लीमेंटरी प्रॉमिसेस कोन तो एक्ट कोन कोजी सेट ऑफ प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिसेस सब जिंस को भीतर आसीबो हमरो ये एग्रीमेंट भीतर आसीयो फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर हैला कंसीडरेशन न थाई कि जदि मु फ्री रे कर दोची सो दिस कैन नॉट बी टर्म्ड एज एन एग्रीमेंट माने कोन प्रॉमिस set of promise and तापे गोटे complementary consideration हैला whereby section 2(4) promises that form the consideration or part of the consideration for each other are called reciprocal promises so section 2F कोन कहउची हमरा reciprocal promises रो मीनिंग कहउची मीनिंग कोन ना promises that form the consideration or part of the consideration for each other माने कोन कहउची रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस रो मीनिंग होची गोटे पर्सन अछि आ गोटे पर्सन अछि टू पार्टीज आर इन्वॉल्वड हियर ए पर्सन गोटे पर्टिकुलर प्रॉमिस करबो ए पर्सन गोटे पर्टिकुलर प्रॉमिस करबो दिस इज द प्राइमरी थिंग बट सेट ऑफ प्रॉमिसेस मु कहली कि प्रॉमिस करबी कि तम कोर्सटा ए भितरे कंप्लीट हबो पेमेंट होची मोर एते की 5000 की 6000 जहां भी दिस इज द प्राइमरी कोन हमरो एग्रीमेंट की प्रॉमिस बट सेट ऑफ प्रॉमिसेस रो मीनिंग होची कोन वीकली टेस्ट हबो तो पर वीकली टेस्ट को मते गोटे वीकली टेस्ट को 150 रुपीस मो चार्ज करबी सो दिस इज द कंसीडरेशन फॉर हैला सो प्रॉमिस और पार्ट ऑफ द प्रॉमिसेस हियर सो दिस इज रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस क्लियर ए पेज रे केते की दरकार मु कहि देली मु एक्सप्लेन करली दैट्स व्हाई एडा कोन स्प्रेड हेगी गला बट व्हेनेवर यू आर राइटिंग इट इन शॉर्ट वर्ड्स तमरा बहुत जल्दी सेडा रिवाइज हे जे देखो कॉन्ट्रैक्ट रो मीनिंग Moreover, the Indian Contract Act defines a contract under section 2H. अच्छा एडा तो बहुत important because total Indian Contract Act जेहेतु तमको contract रो section number टा पछरी पारे हैला please write down section number is कोन ना 2H 2H अच्छा एडा तमको मन रखिया पे स्मॉल ट्रिक कोची H in the sense Indian Contract Act हमको इंट्रोड्यूस होछ माने पूरा चैप्टर रा नाम होची इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो जेतलो फर्स्ट टाइम गोटे जणो देखियो तमे कोन कहयो फर्स्ट वर्ड कोन कहयो हाय हैला हाय स्टार्ट्स विथ H so 2H contract is defined under section 2H fine so contract under section 2H as an agreement enforceable by law please underline agreement enforceable by law अच्छा जिंस होची कोन तमे मीनिंग तो पूछुछ बट से कंफ्यूज तमो किन करिया जानछ एक्ट रे कोडा कुआइछ एज पर द एक्ट एडारो मीनिंग कोन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस द एक्ट वर्ड्स इन इट हैला एडा कोडा एमसीक्यू क्वेश्चन भी हे पारे as per section 2J a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable अच्छा 2J कोन कहउची ना जत्तळ को एनफोर्सेबिलिटी तार पळेबो माने से जिंसर किछि पावर रहिबोनी गुड पर्सन पाखरे पावर टी पळेबो आउट पर्सन पाखरे ऑब्लिगेशन पळेबो सेतळ सेटा कोन हे जिवो जे void हे जे सिंपलर टर्म्स रे बुझो void हे जिवो माने तार पावर नै तो से जिंसो के खातिर करिया के भाव दबोनी ऑब्वियसली
when it ceases to be enforceable. Enforceable माने कोन जेतोल को तार enforceability किंबा तार power underlying powers and conditions सब पळेबो से जिंस पळेले सेटा ऑटोमेटिकली void हो जाय अच्छा देखो स्टार्टिंग जहाँ भी अच्छे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल गुड़ा देखो A offered to sell his book to B for ₹100. B paid A ₹100 and bought the book. A is the offerer, B is the offerer accepted, 100 is the consideration. Similarly, A's offer to sell the book is his promise and B's acceptance to pay the money is his promise. When this aforementioned agreement fulfills section 10 of the Indian Contract Act, it becomes a contract. Hela section number 1 2H आ बाकी से कौन कहछि आउडे सेक्शन कहछि कोन सेक्शन 10 भितरे कोन कोन आसीबो सेटा हमें देखि हला से जिंस सब माने सेक्शन 10 भितरे कहया जिंस जेतळ को फुलफिल हे जिवो देन ओनली वी कैन टर्म इट एज अ कॉन्ट्रैक्ट हला एबे देखो ऑफर ए जिंस पढिबार मेन ऑब्जेक्टिव होछि इमति नै कि तमे बुझि नली कहिग्रे बट वेयर एट कोन कहछि सेटा मु देखिया दरकार दैट्स व्हाई वी आर रीडिंग इट अगेन द टर्म प्रपोजल इज अदरवाइज कॉल्ड एज ऑफर हला ऑफर और proposal. An offer is a proposal by one person whereby he expresses his willingness to enter into a contractual obligation. Hala is equal to willingness to enter into a contractual obligation. In return for a promise, act or forbearance. In return for promise, act or forbearance. Forbearance होचे हमर नुआ वर्ड है. Forbearance माने कोन जानछ? मो गुटे पूरा गुटे बड़ इंस्टीट्यूट टी करछ हला से भितरे कोन मते जण कहचंदी हला प्लीज केयरफुली सुनी पड़ा गोटे इंस्टीट्यूट हेची से इंस्टीट्यूट भितर कोन होची मते जण कहचंदी कोन मो एडी पिलान को मोटिवेशन क्लास प्रोवाइड करबी हला से एज रे माने ए एज रे हमर पिलाने पढछंदी से एज रे कोन मो मोटिवेशन क्लास प्रोवाइड करबी हला मो से जिंस एक्सेप्ट करली कि ठीक अछि मो बर्दाश्त करबी आई कैन बियर इट तो ए जिंस कोची फॉर बियरेंस हला माने कोन फॉर बियरेंस माने कोन से गोटे पर्टिकुलर पर्सन रा एक्ट ता बियर करिया पे किछि पैसा नोच ही इज यूजिंग माय प्रेमिसेस हला से पर्टिकुलर जिंसडा मो एक्सेप्ट करली तापे मते किछि पैसा मिलला सो दिस इज नोन एज व्हाट forbearance. So proposal is the willingness to enter into a contractual obligation in return for promise, act, forbearance. तीनटा keywords आसला idiom promise, act and forbearance. ए तीनटा जिंस पे मो जदी गोटे contractual obligation enter करिया पे acceptance जणैली I have accepted a consent तो सेडा अपन कोन proposal किबा offer एडा होची bare actor words act कोन कहची सेडा Section 2A of the Act. एडारो section number कौन हमरो 2A. Fine 2A. अच्छा 2A डा किने मन रखियो जेतले गोटे ऑफर दोच हला गोटे ऑफर टी आस जियो रो गोटे ऑफर टी आसी किबा कोन गोटे ऑफर टी आस तो तमे कोन गयो ऑफर आसला लको ए सुन लो टिके ए सुने तो कोन हला ए रे स्टार्ट हला ना नहीं तो ऑफर सेक्शन नंबर होची 2A कांटेक्ट कौन कहिथिले फर्स्ट रे हाय कयो हेलो हाय तो 2H एजेंसी मोन इन्वेंट कर दो जिनिस नीचे हला दिस इज आई थिंक आई मीन मन रखिया पे कोन ओडे कोन से जिंस ओडे लाइक ह्यूमर ऐड हला हमें बहुत दिन जे मन रखि पारे हला So, Act defines proposal or offer as when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstentions. माने से बहुत बुले कहबो लॉ रो गुटे अभ्यास होचे कोन एतिक जिंस एमिति पुरा बुले के आन की कहबो बट बेयर एक्टर मीनिंग ता हमें जानि बदल तमे बुझी सारछ बट बेयर एक्टर से पढ़ The person making the proposal is called as offerer or proposer. कहिछि ऑफरर किंबा प्रपोजर किंबा प्रॉमिसर भी कहिछि हला सेडी ऐड कर दियो ऑफरर किंबा प्रपोजर काई कोड लिखितला ऑफरर किंबा प्रपोजर जिंस होछि कोन तमे जत्ते शॉर्ट नोट्स बनेबो सेते अधिक रिवाइज करि परिबो कहि दियंती सब टीचर की यार रैंक लाने के लिए तुमको 4 बार रिवाइज करना पड़ेगा पूरा बट 4 बार किंदी करू किछ ने माने देखो
ऑब्वियसली तमे पूरा जिनसटा पढिबो तमु हेले इच्छा अछि हैला बट से जिनस रिवाइज केनी हबो कम थिले ना इवन से टीचर को जदि तमे कहयो सी भी चाहियो कि यार मते 5टा 6टा पेज रे कोन गोटे चार्ट रे मिले हेले मु टिके देखि दै थान सब दिन उल्टे दै थान तमे जानि छ 50 60 पेज अछि को पिला रिवाइज करि पारि पिला हेले नै के हेले रिवाइज करि पारियो कि दैट्स व्हाई आम पय आमे आगे हेल्प माने काढियार अछि बुझिना आ प्रॉमिस रे कोन ना अछि हमरो कोन अछि ऑफरी अछि एंड एक्सेप्टेड हैला हिला से लाइन टा आउथरे तमे बुलियाओ पड़िबा लिखि देला सेठी संगे संगे फाइन therefore to constitute a valid offer such an offer must be clear defined complete final in terms and not be vague in terms vague माने unclear or confusing एवढा सब कोन लॉ टर्म्स कोड एमती ना कि तुमको लॉ लैंग्वेज आगे लिखियार अछि बहुत पिला पचरंदी कि लॉ लैंग्वेज दरकार कि सेक्शन नंबर दरकार नहीं सेक्शन नंबर शैल ओनली बी कोटेड व्हेनेवर यू आर कॉन्फिडेंट तुमको पूरा पूरी कॉन्फिडेंस थिले जाएगी भी तुम सेक्शन नंबर कोट करे बुझिना must be communicated to the offeree अच्छा तुम कहि ना आगा सेडा ऑफर किने हैला वैलिड ऑफर हैला कि नहीं it's communicated either in writing or oral हैला भलो हबो जदी लेखि के दे देबो जदी से सुनलानी को मोर अछि तो तमे कहयो कि यार एते एते जिंस मु कहि दै छी तमे पर टिके फ्री हैला पर पढ हैला मे बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स और इम्प्लाइड टर्म्स हैला एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स और इम्प्लाइड टर्म्स माने कोन टर्म्स होची कोन मते कोर्स सारियर अछि 6 मास भितरे हैला इम्प्लाइड टर्म्स होची कोन ऑब्वियसली मते डेली क्लास करे अछि ल कोन एडी सब्जेक्ट की से जिंस से अलग रे कहि थांदा कि नाही सेटा होची इम्प्लाइड टर्म्स हमरो माने टर्म्स हमें हमो क्लियरली मेंशन हबो बट केति की जिंस इम्प्लाइ हबो से जिंस भी कहि देला आगे बेटर कहि देले बेटर कॉन्ट्रैक्ट भितरे बट आमे सेटा जानि ऑब्वियसली मते जदी से कहि छी कि तुम मो घरडा एमती रखिस तमे जाय कि फर्निश करि देबो तो से मो कोन आउथरे पचार थांदी कि तुम चाबी दबो ना नाही हली दबो आगे सी ऑब्वियसली दिस इज एन इम्प्लाइड टर्म बुझिना अच्छा प्लीज राइट डाउन हियर वैलिड ऑफर रो terms plus implied terms terms plus implied terms हैला देन आछि कोन हमरो communicated to offering our communication टा हमरो writing और oral बुझिला तीनटा पॉइंट्स कवर हे लाइड द नेक्स्ट होचे हमरो कोन must be clear defined complete clear defined complete account and final non confusing से को वर्ड यूज करछि सेठी वेग non confusing बुझि पालो must be clear defined complete final and non confusing 5 keywords are there here keywords उडा हम पॉइंट न करले मन रखि पारियन थिपो तमे बुझि जैतिबो बुझिबाडा एंड रिटेन करिबाडा दिडा टोटली डिफरेंट थिंग्स हैना सो वैलिड ऑफर कोन इट्स अ वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन केस ल भी आसी पारियो दिनसो धरि गिरी हैला लिखि दियो पाखरे सीएल इन मु जोडी सीएल लिखि थिबी सेटा होची केस ल पॉइंट हैला इट्स अ शॉर्टकट वैलिड ऑफर भितर हम कोन चारटा जिंस डिस्कस हेची अगेन मु कोजी मस्ट बी क्लियर डिफाइन कंप्लीट फाइनल नॉन कंफ्यूजिंग क्लियर डिफाइन कंप्लीट फाइनल नॉन कंफ्यूजिंग and terms and implied terms tapare communication ro dida points achi communicated to the offeree and the communication must be either in writing or oral form clear देखो से एग्जांपल देछि these examples exactly से पके दिए केस लॉ रे with the change in names ना उडा को चेंज करि के से कोन करू ओके क्लियर पिला माने एबे देखिए हम एग्जांपल
Ram tells Ghanshyam that he wants to sell his house to him just before he dies. Kebe moryo. Ram mortgages the house in favor of the State Bank of India for loans. Ghanshyam sues Ram for doing so as there was a contract between Ghanshyam and Ram for the sale of the same house. In this situation, Ram has not told at what price does he want to sell the house to Ghanshyam or the exact time of sale. को जिनसे mention ही नहीं हमरो, को price रे हबो mention ही नहीं, and को time रे सी जान ले तो कहियो, मरला आगरे बंची गछ, मरला आगरे बिकी ले कहले कोन? Seriously, से कोन पे सुन लागी? Again आमे रागिले हबन. Hence, this cannot be a contract as the offer was unclear. को points को धरी के हेलाने not defined, incomplete and vague. अच्छा पिला माने मु कहि दोछि केस लॉ रो फॉर्मेट केमति रहबो. This can be a case law for you. कोडी पर्यंत जानछ? एते पर्यंत. तमको एतिके जिंस देगिरी very important point एटा सुनो. एतिके जिंस देगिरी he will ask you whether it's under the conditions of a valid offer or not. Whether the particular situation asked here is satisfying the conditions of valid offer or not. पचारिबो. तो तमे सेना no directly लिखि परिबनी. First कोन करिबो? Situations, circumstances कोइ की हेडिंग दबो. Case law रो फॉर्मेट कोन हमरो? मडी रफली लिखि दोछि. First circumstances. First circumstances as for then law point applicable, co-act, obviously Indian Contract Act, co-act applicable, hella, analysis and conclusion. एतिकी लिखले जाएगी तो मु 7 out of 7 मिलबो. सेथिरे भी से 6 मार्क्स दिए. पिलाने भाबी दियंती कि 7 गणियो ना आमे एग्जाम सरला परे. इट्स अ वेरी कॉमन थिंग. के तो एग्जाम हॉल रे गणि दिए कि यार 4टा हां 3 दबन ना कोन 7 5 दबन ना कोन ए जिंस होय ना तो से 5 दबन ना कोन केबे हो जानछ ना तमे जतलो एतिकी लिखि देइदिबो. तीनटा जिंस देखो पिलाने तमे निजे निजे लिखि देबो. गोटे होजी सर्कमस्टेंसेस कोन पे ना क्वेश्चन रे जहां भी होछ सेटा ऑटोमेटिकली लिखि देबो. सेकंड थिंग होची को एक्ट, ऑब्वियसली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चन देखले जानि परियो ना को एक्ट दीटा जिंस हेला. थर्ड थिंग होची लॉ पॉइंट कोडा एप्लीकेबल. लॉ पॉइंट कोड एप्लीकेबल भी तुम लिखि पारियो काहे कि ना ऑफर ऑफरी जहां भी तुमको दुष्टि से जिंस को धरी कोन तुम टिके कोटेशन दे पारियो. बाकी दीटा जिंस रहला जोटा कि तमरा मेन आंसर एनालिसिस पार्ट एंड कंक्लूजन पार्ट. एनालिसिस पार्ट रे कोन हबो से लोकर भूल कोन तमे बुझे को जिंस मिस हिची बुझेबो. एबे से जिन कहले देखो दिस हेंस दिस कैन नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज़ एजा होची रीजन अनक्लियर नॉट डिफाइंड इनकम्प्लीट वेग. एजा होची रीजन आउ कंक्लूजन होची दिस कैन नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट एज द ऑफर as एटा कोन it's not satisfying the conditions of a valid offer. आ तमरो जो लॉ पॉइंट अछि लॉ पॉइंट भीतर तम ए जिंसटा लिखिबो. जदी ए क्वेश्चन पड़छि तो वैलिड ऑफर कोन चार्ट करि के लिखिबो. बहुत अधिक से मार्क दबो माने he will be very much impressed with your answer. बहुत इंप्रूव हे जिवो से माने प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू. काहेंगे ना तम आगो पिला लिखियो ना तम पछ पिला लिखियो लिखिबो कि के हिंदी से एग्जाम प्रेशर रे तम से क्वेश्चन रे रिकॉग्नाइज आगा हबन. This will happen only when you practice the past exam questions. एबे मु कहि देली केस लॉ पॉइंट ऑफ व्यू तमे संगे संगे गोटे क्वेश्चन देखिबो तम माइंड रे कोन स्ट्राइक होचे सेटा देखि ऑटोमेटिकली होबो. यू कैन डेफिनेटली स्कोर अबव 65 आराम से स्कोर हे पारिबो. मु कहि बि सेटा हला तो वैलिड ऑफर रो मीनिंग दा सेडी लिखिबो. एनालिसिस पार्ट रे कोन कोन हेछि लिखिबो. कंक्लूजन पार्ट रे कोन लिखिबो वेदर इट्स अ वैलिड ऑफर और नॉट. से जिंदी कहला यस और नो सेतडो लिखिबो. बुझिला. अल्टीमेटली एग्जामिनर किने पढिया जानछ ना पछकानो आंसर टा पढिबो. से कंक्लूजन देखिबो एनालिसिस देखियो देन से ऊपर पार्ट टा देखियो. क्लियर फाइन. एडा तमे लॉ नोट रो पछपटे लिखि दे पारिबो कि कोन कोन जिंस अछि. क्लियर देखो देन होची ऑफर टाइप्स कोन लेखा एडी ऑफर टाइप्स. Offer can be general offer and specific offer. Specific offer other name टा बहुत सारे क्वेश्चन आस्थिला. special offer. Okay, specific offer or special offer. If an offer is made to a specific person, it's called special offer or specified offer or specific offer or special offer. जहां भी हमें कहि पारे गोटे पर्टिकुलर पर्सन को धरि के ऑफर टा हेछि हैला से पर्सन को से ऑफर इंप्लाई हेछि दैट्स अ स्पेशल ऑफर अ स्पेसिफिक ऑफर. Such offer can be accepted by such specific person only. If an offer is made to the world at a last, it's called as general offer. Generally समस्त को जहां भी ऑफर आछी माने कोन जॉब एप्लीकेशन ऑब्वियसली आ जदी गुटे पर्सन को कॉल करी कि गुटे कंपनी रा तार एबिलिटी को देखि कि मनर ताकू सीईओ अपॉइंट करिया को इच्छा हला
He is calling you and telling that you can be appointed as a CEO if you are interested. So this is a specific offer. जदि से कंपनी रे कोन फाइनेंशियल एनालिस्ट रो पोस्ट पड़िछि ताको 5टा दरकार. So this is the general offer. Clear as that. It can be accepted by any member of the general public by fulfilling the conditions laid down in the offer. केमिति accept हे परिबो? It's a very important point. Fulfilling the conditions laid down in the offer. हैला offer तो generally समस्त दिया होछि. जदि से conditions किबा prerequisites offer माने accept हैला fulfill हैला then only we can term it as acceptance. माने कोन job application आसिछ. CMA intermediate दरकार. CMA intermediate दरकार. BCom दरकार. एतिके जदि एतिके दरकार तो किए एक्सेप्ट करि पारे. बट से कहला CMA इंटरमीडिएट रे वी नीड 50%. बीकॉम रे हमको 65% दरकार. सेटा स्पेसिफिक नै. जनरल ऑफर रे कोन होची ना एतिके जिंस जदि सैटिस्फाई हैला देन ओनली तमे पक्के पारे. स्पेसिफिक ऑफर होची कोन तमको स्पेशलिस्ट से कॉल करिके कहिला कि तमे जदि इंटरेस्टेड अछो सी क्राइटेरिया से देखि देछि. बट तमको से कॉल करिए कहले इफ एट ऑल यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट. तो एक्सेप्टेंस से इधर तमे करि परियो नले तमे मना करि परियो. बट जनरल ऑफर रे कोन किए हेले भी करि परियो. जनरल ऑफर भितरे से कोची कंडीशंस कोन जदी से भितरे स्पेसिफिक कंडीशंस से देछि. एबे एक्चुअली से जो पॉइंट कहला से गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट हे परियो. कंफ्यूजिंग पॉइंट हे परियो. ऑफर भितरे जदी स्पेसिफिक कंडीशंस अछि सो दैट इज नॉट अ स्पेसिफिक ऑफर. हैला केबे भी नै. जनरल ऑफर आगा स्पेसिफिक पर्सन को देला आगा सेटा स्पेसिफिक ऑफर. ओके सेटा गोटे पॉइंट लिखि दे पारियो. लिखि दे ऊपर. वेरी गुड. स्पेसिफिक pre-existing conditions do not give rise to specific offer. बुझला. It's still a general offer. के बेले कंफ्यूज होबन. एमती पॉइंट रागा से भूले दो. आ से एग्जाम प्रेशर रे जदि तमे गुटे थरे न देखिथिबो से टाइम रे किछि मन पडियन. जेते जे एग्जाम हॉल बाहर अछि गुटे ये गला पर गुटे माइंडसेट. क्लियर. देखो सेक्शन 4 of the Indian Contract Act 1872 lays down provisions relating to the communication of offer is complete when it comes to the knowledge of a person to whom it is made. It's a very important point. तमे भी देखिथियो बहुत थरे बिट क्वेश्चन टा. फर्स्ट पॉइंट रे पचरा होछ communication of offer. हैला एडी लिखिथियो. Communication is complete. Communication is complete. माने communication of what? Offer is complete only when से कहि देले नै. When it comes to the knowledge. When it comes to the knowledge of person to whom it is made. To whom it is made. बुझि पालो. क्लियर. एडा भी गोटे केस ला पॉइंट. शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली 3 मार्क्स. तमरो फॉर्मेट होची 7 and 4 मार्क्स. आई थिंक 7 और 4 मार्क्स और 7 और 5 मार्क्स एमती कोन अछि. हैला रिवाइज पैटर्न टा कोच. जदी से 7 मार्क्स क्वेश्चन पछारिबो तो तुमको अंडरलाइन पॉइंट्स गोटे 5टा 6टा थिला वाला पॉइंट पछारिबो. जदी 3 मार्क्स रे मनर से केस ला पछरा जाछ तो एमती सानो सानो पॉइंट पछार. एंड जिंस होछ कोन जानतो सरप्राइजिंगली 3 मार्क्स क्वेश्चन आर डिफिकल्ट टू आंसर. काई गोटे स्पेसिफिक पॉइंट धरि कि रहयो मन पडियोनी तुमको. बट 7 मार्क्स क्वेश्चन टा कोन जेतु लॉन्ग क्वेश्चन टा तुम इजीली टिके आंसर करि पारे. Clear? देखो. It states an offer which has been communicated properly continues as such until it lapses or revoked by the offer or rejected or accepted by the offeree. तो ए जिंस केते जे चालिबो से जिंस एक्चुअली से एक्सेप्ट करला ना नै जणा पड़ला जे चालिबो. सेडा कोन से कहया दरकारी सुने पड़ियो कोन करियो. An ideal offer should have all the essentials of valid contract. Please underline all the essentials of valid contract. All the essentials of valid contract. Valid offer nahi, valid contract.
as once it's accepted by the offeree it becomes a contract. How offer accepted by offeree leads to what? Contract. बुझी पालो? However, an offer can also be revoked. Section 5 provides that a proposal may be revoked at any time before the communication of acceptance is complete as against the proposer but not afterwards. It's a very important point. Hela? Lekho. Offer can be revoked. Offer can be revoked or what? Cancelled or what? Rejected. बुझिला? Cancelled, revoked, rejected. जहाँ भी word ही पर केबे ही पाइलो केबे before the communication of acceptance before communication of acceptance is complete against proposer against what? Proposer but not letter. Clear? Not letter. It will be exam question the so that's why I'm underlining. Uncommunicated offer cannot result in a promise. Fill in the blanks I think asthina. Dash offer cannot result in a promise. So pila lekhi dothile unvalid offer joda ki contract mane promise. Seda bhi answer heyi pariyo but book re joda hechi seda ka mane amko mark fetching na. Uncommunicated offer cannot result in a promise. अच्छा तुमको ऑफर भितर को जिनस अच्छी सब जिनस मुझे लिखिदेली ऑफर रो मीनिंग ऑफर रो सेक्शन नंबर केमती लिखिबो मु कहूच ऑफर रो सेक्शन नंबर स्टार्ट करियो ए ऑफर टा सुने हला ऑफर टा सुने ऑफर रो मीनिंग ऑफर रो वैलिड ऑफर रो कंस्टिट्यूएंट्स तापरे कोन टाइप्स ऑफ ऑफर आउ स्पेसिफिक ऑफर रो गोटे की पॉइंट जोडा कि स्नेहा कहला देन कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर टा केतळ कंप्लीट होची ऑफर केतळ रिवोक हे परियो रिजेक्ट हे परियो कैंसिल हे परिबो ऑफर केतळ को पहुंचला ले हमें कहि परिबा एतिकी जिंस हम डिस्कस कर देले एतिकी जिंस रागा तमरो पॉइंट आसे क्वेश्चन एक्सेप्टेंस रे देखो टू कंस्टिट्यूट अ प्रॉमिस द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज मस्ट बी कम्युनिकेटेड प्रॉमिस हेबा पे कोन इंटेंशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड हैला one cannot accept an offer which had not been communicated to him ताको कुआगा ही नथियो से accept केमती करिवो हैला then the term acceptance means admitting and agreeing to something to accede to something or to accept something देखो से word जा केमती देछि the term acceptance means admitting माने कोन admitting माने कोन से again से accepting admitting माने I am admitting that it's my mistake admitting and agreeing to something to accede to something or to accept something accede माने कौन accede माने कौन हाँ accept माने ताको क्रॉस करके absolutely accede माने कौन क्रॉस करके जिबार किबा ऑब्जेक्ट करे पर वेरी गुड तो accede to something or to accept something obviously तो एक्सेप्टेंस होची से एडमिट करिवो को जिंस पई कि से जिंस से करिवो किबा करिवो अगेन से गुट्टे आगा बट बेयर एक्ट कोन होची आमे कोन कुछ डिफरेंस टा रोच एन ऑफर टू एंटर इनटू लीगल रिलेशनशिप upon definite terms to create legal relationship must be followed by an intention of the offeree to accept the offer हैला इंटेंशन ता थिबार अछि से जिंस ऑफर टा एक्सेप्ट करिबा पई हैला से जिंस नथै गिरी जदी डेफिनेट टर्म्स कंडीशंस जहां भी होची सब एक्सेप्ट हेले भी किछ नै एक्सेप्ट तो ही होची फुलफिल तो ही होची बट कोन होची तार इंटेंशन नै अगेन से गुटे जिंस को होची जनरल ऑफर सब क्राइटेरिया फॉलो होची
हैला जॉब अवेलेबल मिल पारे बट से पिलार इंटेंशन नहीं जीवा पई ही वांट्स टू स्टडी ही वांट्स टू कंटिन्यू हिज स्टडीज फर्दर आगु नेबो चाहूची तो से जिंसर इंटेंशन अछि कि जे तो इंटेंशन नहीं एक्सेप्टेंस ता ही पारिबो कि नहीं हैला तो देखो एडर केस लो पॉइंट कोन आस्थिला In case of Thawad and Perumal versus Union of India, the Supreme Court held that before an offer can become a binding promise and result in an agreement, it must be accepted either by words or act. So, acceptance केमती होची can be made orally or in what? Written form. Orally or written form. Offer जेमती है परियो, acceptance भी सेमती है परियो. A person cannot be bound by a one-sided offer which is never accepted, particularly when the parties intended that the contract should be reduced in writing. A promise cannot bind it, make unless the promise has assented to it. Acceptance must be absolute and unqualified. एक गुट्टे last line आगा हमरा important. ए सबु किछि दरकार से कहूची गोटे वन साइडेड प्रॉमिस हबनी जबरदस्ती तमे करि पारियोनी जो जिंसर किछि हेले गोटे कंक्लूजन ए से जिंस पे तमे प्रॉमिस से ताको लाइक बाउंड करि के आनी पारिबोनी वन साइडेड प्रॉमिस करि पारियोनी बाउंड करि पारियोनी अल्टीमेटली कोन से कहया चाहूची एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड माने कोन नो केओस केओस माने कोन किछि कंफ्यूजन नै पर किछि माडोड हबनी से जिंस को धरि की हैला कोन हबो सेटा कंट्रोवर्शियल हबनी हैला एब्सोल्यूट माने कोन परफेक्ट हैला स्पेसिफिक कंडीशन उडा थिबो जोडा कि तमे बुझी पारे से जिंस को काटी किछि कहि पारे माने 5000 रुपीस तमरो स्टाइपेंड माने 5000 आका ताडो अधिक मिले पारे ताडो कम मात्र मिले बनी तार मीनिंग होचे कोन एब्सोल्यूट टर्म्स आ केओस रहयनी कोन जदी से कहे 5000 अछि से लोक आसिले दबो नले नै कि आउट मैनेजर कॉल करले दबो कि कोन से जिंस रहबन केओस रहबन 5000 रुपीस तम अकाउंट रे क्रेडिट हबो बस दैट्स एब्सोल्यूट एंड नॉन केओटिक बुझी पालो provides that the communication of acceptance is complete acceptance ro communication केतळ को कंप्लीट होची जहां भी अछि हमरो communication of acceptance केतळ कंप्लीट होची as against the proposer and as against the acceptor please mark it important complete कार proposer आ कोन acceptor proposer और acceptor दी जण पॉइंट ऑफ व्यू रे हमें देखिया proposer point of view केबे कंप्लीट होची when it is put in a course of transmission to him as so as to be out of the power of the acceptor माने कोन course of transmission to him माने कोन रे तमे निज वर्ड्स रे कहिलो केबे कंप्लीट हेतिबो प्रॉमिस proposer and acceptor हिसाब रे जदी प्रॉमिस था सी तार नॉलेज को गला पर एक्सेप्ट हैला ले हमें कहजु एक्सेप्टेंस ता केबे हबो मोर नॉलेज को आसला पर ऑब्वियसली मो पॉइंट ऑफ व्यू आ तम प्रोसेस रे कोन तम प्रोसेस रे केबे सरलाली कहया कथा जतल तुम सेंड कर दो वेरी गुड सेतियागा लॉ लैंग्वेज देखिया दरकार नै तमे फर्स्ट कोन बुझुचो देखो प्रॉमिस ता केबे एक्सेप्ट हैला ले हमें कहया रे ना मु तम कहि देली तम नॉलेज को सेडा पहुंचियला बुद्धि रे पसियला सेतळ को आ एक्सेप्टेंस ता केबे एक्सेप्ट हिच ना मो जतळ को बुझी जेछ कि तमे एक्सेप्ट करि सारचली कहि कि एंड आ तम पॉइंट ऑफ व्यू केबे सरछि ना तमे जतळ को सेडा पठि देलो मेल करलो कि लिखिलो कि कहि देलो तम हिसाब रे सेडा सरिला बुझिला ना नै एज सिंपल एज दैट एडा एक्सेप्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड आई मीन सॉरी एक्सेप्टेंस रो कम्युनिकेशन ऑफर कम्युनिकेशन रो केस लो पॉइंट आसी परियो प्लीज मार्क इट इंपोर्टेंट एंड सीएल ताडो और एडा टिके इंपोर्टेंट काहेकि 2 पॉइंट्स एडे इन्वॉल्व हिच हैला एग्जांपल टा देखि दियो A proposes by letter to sell a house to B at a certain price. B accepts A's proposal by a letter sent by post. The communication of the acceptance is complete as against A when the letter is posted and as against B when the letter is received by A. हैला बुझला एति क्या अछि एडा त मो डायरेक्ट क्वेश्चन भी हे पारे because children tend to ignore this. Okay, thanks for watching. Please subscribe to the channel.